Okay, good morning everybody. Good morning, Namaskar, Suprabhat. है ना? To all my dear student of class 11 science, so welcome again and join our chemistry live streaming class. So today dear we will proceed with our topic. We were discussing about the application of the equilibrium constant. In the last class we discussed the numerical based on the case. Okay. Now after that application of the equilibrium constant, how many total application we discussed? We discussed the 3 application. Those were predict the direction of the reaction, predict the extent of the reaction, and to calculate the equilibrium concentration of the reactant or the product. Now after that today we will discuss a very much important topic. आज का लेक्चर भी बड़ा मजेदार है, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको, इसलिए प्लीज बी सिट विद योर पेन एंड पेपर एंड डिस्कस व्हाट आई एम गोइंग to see what I am going to discuss with you. Now, suppose मैंने आपसे बोला कि suppose any reaction, for example, P is a gaseous phase plus Q, it is also the gaseous phase. Okay? Suppose the reaction proceed to form R, it is also the gaseous phase, and S, it is also the gaseous. Okay, now suppose this is a particular one chemical reaction and that reaction is at equilibrium, है ना? This particular reaction take place at equilibrium. ये at equilibrium. So I think everybody knows that given any one of the chemical reaction take place at equilibrium, which constant you will find? Equilibrium constant. क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे. ठीक. So whenever we have to find out the equilibrium constant, we have to write the expression for that. इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर आप Kc का एक्सप्रेशन लिखोगे, so what the reaction will come? The reaction will come like that: concentration of the product upon concentration of the reactant. ऐसे लिखोगे. So this is the way to find out the Kc. अब ये जो Kc है, in that Kc what we are writing? We are writing about the concentration. The meaning of this bracket is the concentration. आप याद करो, इसको मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, एक्टिव मास भी बोलते हैं. ठीक है. यहीं पर बात क्या आता है? नाउ प्रेशर कांस्टेंट, एक नई चीज पढ़ने जा रहे हो. प्रेशर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम. Okay, now we are going to find out the equilibrium constant at pressure, है ना? प्रेशर कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं. तो जब आप प्रेशर कांस्टेंट निकालोगे तो उससे किससे लिखते हैं? That is presented by the word Kp. The Kc is the equilibrium constant and Kp is also the equilibrium constant but at the given pressure. इससे इसको प्रेशर कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है ना? So how we have to write down the Kp? अब Kp कैसे लिखते हैं? देखो, आपने जब Kc लिखा तो कैसे लिखा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. So like that, whenever we have to write down the Kp, then how we have to write down the Kp? The pressure of the product upon pressure of the reactant raised to the power of stoichiometric coefficient. ठीक है. तो अगर हमें इसका Kp लिखना होता तो हम कैसे लिखते? प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट R, ठीक, मल्टीप्लाई करते हो ना, then pressure of the product S upon pressure of the reactant P into pressure of the reactant Q. So this is the way to write down the expression for the Kp. एक बार फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना. जैसे सपोज मैंने बोला I am writing over here PCl5 decompose at equilibrium to form the PCl3 plus Cl2. ठीक, ये मान लो कोई एक रिएक्शन. So for this particular reaction, how we have to write down the Kc? कैसे आप लिखोगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट हो गए, into molar concentration of the product Cl2 upon molar concentration of the reactant means PCl5. There is no any stoichiometric coefficient. If the stoichiometric coefficient will be there, that will goes to the power. तो यहाँ पर कोई coefficient नहीं है तो वो power पे नहीं गया. So this is the way to write down the Kc. Like that, whenever we have to write down the Kp for this reaction. अगर हमें इसका Kp लिखना होता तो हम कैसे लिखते?
आप लिखते ये ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है, उसको हटा के पी लिखना होगा बिकॉज दिस टाइम वी आर राइटिंग विद द टर्म्स ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट PCl3 है ना इनटू प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट Cl2 अपॉन प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट PCl5। So this is the way to write down the Kp for the particular reaction if the reaction take place at equilibrium. Is it okay to everybody? You please text me the message. Text me. Is it okay to everybody that how we have to write down the expression for Kp? या मैं एक दो एग्जांपल और भी लिख देता हूं, बट इतना समझ में आया है क्या आपको? प्लीज टेक्स्ट मी. Okay, I got the response only from Anam, Riya, Ashutosh. Okay, what about others? चलो कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, उसको और ध्यान से देखो. फॉर एग्जांपल N2 अमोनिया का फॉर्मेशन देख लेते हैं, +3H रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3. Okay, now suppose this particular reaction, for this particular reaction, if the question will come, write down the expression for Kc. हमें इसका Kc का expression लिखना है, as well as we have to also write down the expression for the Kp. We have to write down the expression लिखें. We have to write down the expression for the Kp as well as the Kc. Now how we have to write? देखो, Kc कैसे लिखोगे? Kc लिखने का तरीका बहुत आसान. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट यहां पर क्या है? NH3 रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. हाउ मेनी कोएफिशिएंट? 2, तो पावर में चले गए अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर, तो N2 में कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं है, H2 पे कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? 3, तो ये पावर. ठीक, सो दिस इज द वे टू राइट डाउन द Kc फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर वी हैव राइट डाउन द Kp. अगर हमें Kp लिखना होगा तो हम कैसे लिखते हैं? प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट NH3 रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. दिस इज द वे टू राइट डाउन. यहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, या कभी-कभी आप क्या देखोगे, sometime in the notebook or any one of the book you can also observe like that. ऐसा भी लिख देते हैं कि pressure of the ammonia square, why the square? Because the stoichiometric coefficients are the 2 upon pressure of the reactant. So pressure of the reactant N2 into pressure of the reactant H2 power 3. ऐसा लिखिए. ठीक है, मैं तो कहूंगा आप ये स्मॉल ब्रैकेट लगा के लिखो तो ये ज्यादा बेहतर तरीका. So only what is the difference? You will not put this big bracket. आप बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाओगे because the meaning of the big bracket is the molar concentration. Okay, so this is the way to write down the expression for the Kp and the Kc. Now you please text me. Now I want the answer from all the students. You please text me. Is it okay to everybody? आप समझ में आ गया अच्छे से सारे बच्चों को? तो जिन बच्चों ने मुझे टेक्स्ट नहीं किया था वो भी बता दो. Is it okay to everybody? Or still any doubt? Okay, good. Sabash. So Pratik, Nidhi, Prakhar, Tanvi and Anam. Okay, very good. Kalyani, Manur, Mehak, Vineet. Okay. Ashutosh, Sneha, Aditi, Riya. What about Arya saying? I have not got the response from Arya. When all the students are giving the response, Arya, you will also text me. Is there any doubt or is it okay to you? Because now I am going to discuss a very much important proving expression between Kp and Kc. So the Kp and Kc are very much important part. Okay, now so after that, so this is the way that how we have to write down the expression for the Kp and the Kc. Now I am going to discuss one numerical based on the Kp. ठीक है, एक Kp पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगा देते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एंड देन
we will discuss one relationship between Kp and Kc. बहुत मजेदार टॉपिक है वो, Kp और Kc के बीच में एक रिलेशन प्रूव करना है, but before that one numerical we are going to solve based on the Kp, है ना। पहले Kp पर बेस्ड एक सवाल लगा लेते हैं, फिर अपन Kc को सॉल्व करते हैं। So what is the question? The question is एक सवाल दिया हुआ है for the reaction फिर से अमोनिया का फॉर्मेशन है। एक्चुअली दिस क्वेश्चन आई एम राइटिंग फ्रॉम वन बुक, एक किताब है मेरे पास, वहां पर उस पर ये सवाल दिया हुआ है ना। फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 and H2, द पार्शियल प्रेशर of N2 and H2, partial pressure of N2 and H2 are, दोनों का प्रेशर दे रखा है 0.80 and 0.40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। 0.80 and 0.40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर at equilibrium, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर दे रखा है, ठीक है भाई। द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज, द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 2.80 atm। टोटल प्रेशर भी दे रखा है 2.80 atm। calculate Kp for given reaction. Now we have to find out the Kp. Kp find करना है इस रिएक्शन के लिए, Kp find out करना है। Please solve it. All of you please solve it and text me what is the answer. Please calculate what will be the Kp for this reaction. इस सवाल के लिए Kp क्या निकल के आएगा? Any one of you? It's a very much important question. बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से लगाना, है ना। एक जगह बहुत प्रिकॉशन लेके क्वेश्चन करना होगा। टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज गिवन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द Kp. Is the statement of the question okay to everybody? Is the statement of the question is okay to everybody? Or anybody is having doubt in the question statement? So this is the numerical. Please find out what is the answer will come. What will be the answer? So first of all, the reaction already is given to us. Reaction तो अपने को पता ही है ना। Reaction तो अपने को मालूम ही है, N2 plus 3H2 reversible reaction 2NH3, ये अपने को पता है। So for this reaction how we have to write down the Kp? Kp लिखोगे तो क्या आएगा? Pressure of the product ammonia raised to the power 2 upon pressure of the nitrogen into pressure of hydrogen power 3. So this is the expression for the Kp. Now just put the value and find the result. What will be the answer? First of all, anybody can text me what is the pressure of ammonia you are writing over here. What is the value of the pressure of ammonia you are writing over here? Please text me. Are you solving this? What will be the pressure of ammonia? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमें मालूम है 0.80, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है 0.40। यस, वेरी गुड, शाबाश।
सो तन्वी, प्रखर एंड मयूर गॉट द राइट आंसर। प्रेशर ऑफ अमोनिया जो है वो 1.60 होगा। बहुत ध्यान देने वाली ये बात है ना, क्योंकि प्रेशर ऑफ अमोनिया हमें नहीं पता यहां पर। इवन प्रेशर, टोटल प्रेशर वी नो दैट 2.80, ये पता है ना। सो हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ अमोनिया? द प्रेशर ऑफ अमोनिया विल बी 2.80 minus 1.20, so that is 1.608। बिकॉज हमें टोटल प्रेशर पता है, टोटल मतलब सबका प्रेशर मालूम है, तो इन दोनों को ऐड करके जब आप माइनस करोगे तो प्रेशर ऑफ अमोनिया है। एंड नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ओवर देयर। अब जब आप वैल्यू यहां पर लगाओगे तो क्या आएगा? Kp is equal to 1.6 का स्क्वायर अपॉन 0.80 into 0.40 का क्यूब, 0.40 क्यूब। Now anybody find out what will be the answer? What will be the answer of Kp? कितना आएगा? Values already I discussed with you. When you will put the value, then what the result you will get? What will be the value of Kp? Kalyani is writing 2. Sorry Kalyani, it's wrong. Kalyani, it's wrong answer my dear. 2 नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता 2. Yes, Prakhar got the right answer. Tanvi, you also check your answer dear. Tanvi, your answer is also wrong. It's not 2 or the 20, it's the 50 only. Good Arya. Arya Singh also got the right answer. Ashutosh, then Mehak. Mayur, please check your answer. Okay, good, Sabash. So the answer will be the 50. Answer of the Kp will come 50. ये 50 आएगा, ठीक है ना? So this is the way to find out the value of pressure constant. ठीक है भाई? Good Vineet, Sabash. So is the question clear to everybody? Should we move forward? Is it okay to everybody that how we have to find out the value of Kp and how we have to write down the expression for Kp? दोनों बातें समझ में आ गई? Okay, good, Sabash. Now, the next topic we are going to discuss, जो ज़्यादा important है, and that is the relationship between Kp and Kc. बहुत मजेदार टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, मजा आएगा, है ना? Relationship between Kp and Kc. क्योंकि कोई भी प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम पर है तो वहां पर हम Kc भी निकाल सकते हैं और Kp भी निकाल सकते हैं. So the question is important कि suppose if the Kp is given and they are asking the Kc, or if the Kc is given and they are asking about the Kp, how we have to calculate? कैसे करेंगे? तो वो एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाता है. So what is the next topic? The next topic is relationship between Kp and Kc. Relationship between Kp and Kc is a very much important topic. ये बहुत ही ज्यादा मजेदार सा टॉपिक है, तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो. ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हो. कैसे सॉल्व करें? नाउ लेट अस कंसीडर एन इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन. अपन ने कोई भी एक केमिकल इक्वेशन को कंसीडर कर लिया. कैसे? सपोज मैंने बोला Na, या ऐसा लिखते हैं NaNB देन MsOP, है ना? चलो RC प्लस SD. ठीक है भाई, ये मैंने ले लिया. ठीक है? सो वेयर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इसको भी स्मॉल r कर देते हैं. कैपिटल C and कैपिटल D are the reactant and the product, while small m, small r, small s are the stoichiometry coefficient. ठीक है? मैंने बोला साहब ये कोई एक हमारा रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पर. सो फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc? Kc क्या आएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट A पावर m and B पावर n.
ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द, इज इट ओके टू एवरीबॉडी? दिस स्टेप इज ओके टू एवरीबॉडी? फटाफट मुझे टेस्ट करते जाओ तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जाऊंगा, स्टेप वाइज अपन काम करेंगे। इज इट ओके? केवल थंब साइन देते जाओ। प्लीज गिव मी योर थंब एक्सप्रेशन, गिव मी योर थंब एक्सप्रेशन प्लीज। ओके गुड, तो ये केसी आ गया ना, गुड शाबाश। नाउ प्रेशर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अब अगर हमें प्रेशर कांस्टेंट निकालना है, so हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर कांस्टेंट फॉर दैट। इसके लिए अगर हमें प्रेशर कांस्टेंट निकालना है तो कैसे करोगे? देखो, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट C raised to the power R into pressure of the product D raised to the power S upon pressure of the reactant A power M into pressure of the reactant B power N। ठीक है, अब जरा ये बताओ, इज द सेकेंड स्टेप ओके टू एवरीबॉडी? इज द बोथ स्टेप ओके टू एवरीबॉडी? हाउ वी हैव टू राइट डाउन द Kc and how we have to write down the Kp for the particular reaction? फटाफट बताओ भाई। ओके गुड, शाबाश, गुड गुड। सो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द Kc एंड Kp। अब करने क्या जा रहा है? Kp और Kc में रिलेशन ला रहे है ना, तो Kp Kc में रिलेशन का मतलब कुछ एक फार्मूला ना पड़ेगा, है ना। आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। द आइडियल गैस इक्वेशन इज Pv is equal to nRT। पता है ना, Pv is equal to nRT is आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहां से अगर आप P निकालोगे तो क्या आ जाएगा? P is equal to n upon V RT। ठीक, now this is the one question for you all, anybody can text me what is n upon V? In the place of n upon V, what we can write? Anybody can text me, this is a good question, जो बताएगा मुझे मजा आएगा, मतलब उस बच्चे को बहुत अच्छे डेप्थ में पता है। In the place of n upon V, what we can write? क्या लिख सकते हैं? ओके, आशुतोष ने लिखा मोलैरिटी, वेरी गुड। What about others? I want the answer from all the students, please. Okay, yes, very good, Riya. So Riya, Ashutosh and Prakhar, they all wrote the right answer. आशुतोष, ये मोलैरिटी है, बट मोलैरिटी मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन हो गया, है ना। वेरी गुड, शाबाश प्रखर, एंड मयूर आल्सो, सारे बच्चों ने बढ़िया लिखा। तो इन द प्लेस ऑफ n upon V, मतलब यहां मैं लिख देता हूं, इन द प्लेस ऑफ n upon V वी कैन राइट कंसंट्रेशन, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन। तो यहां पे C लिख सकते हो। अगर C लिख दोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू CRT। P इज इक्वल टू CRT आ गया ना, P इज इक्वल टू CRT। अब ये जो P का वैल्यू आया है, ये हर जगह आप यहां पुट कर देंगे। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द P इन द एक्सप्रेशन नंबर 2। मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, so now the value of the P we will put in the equation number 2. Till now, is the steps are okay? Are all the steps okay till now? That how the P is equal to CRT came? ये जो P is equal to CRT आया, यहां तक समझ में आ गया? Now, after that, अब क्या करोगे? तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, put the value of P in इक्वेशन सेकंड, है ना। P की वैल्यू को अपन सेकंड एक्सप्रेशन में रख देंगे। अगर रख देंगे तो क्या आएगा? देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा Kp इज इक्वल टू, P की जगह CRT आ गया, तो CRT, और ये तो C ऐसे ही बना रहा, है ना, पावर स्मॉल r इनटू, इधर क्या बन जाएगा, है ना, इधर बन जाएगा CRT, सबस्क्रिप्ट में D लिख देता हूं, और ये बन जाएगा S अपॉन P की जगह कैपिटल CRT आ गया, ये A केवल सबस्क्रिप्ट में है, और ये हो गया पावर M, और इसी तरह से ये क्या बन गया, CRT, ये B है,
ठीक है ना, और पावर n. Is it okay to everybody? Because this is the most important step. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आपका यही है. ये समझ में आ गया? How we have to just write the, after keeping the value of the p, this expression will come. Is it okay? आगे बढ़े. चलो. Now, so after putting the value of the p in the expression of the kp, what the next step will come? अगला स्टेप क्या आएगा देखो. The next step will come. आपको ध्यान रखना, मैं ब्लू मार्कर का यूज कर रहा हूं. kp is equal to, अब क्या आएगा देखो. Now everybody can see over here RT सेम आ रहा है. ठीक, तो बेस सेम है तो इस वाले पावर को अपन अलग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, C R C D पावर S C A पावर M C B पावर N, और यहां हमें क्या मदद मिल गई, RT पावर R प्लस S अपॉन RT पावर M प्लस N. Is it okay? Is it okay? ये स्टेप समझ में आ गया. अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा. तो आपने क्या किया, RT वाले टर्म को अलग कर दिया और ये वाले टर्म को अलग कर दिया, है ना, ये वाले टर्म को अलग कर दिया. Now, you please text me what is the meaning of this capital C. Anybody can text me. What is this capital C? ये जो capital C लिखा है आपने, what is this? What do you mean by this capital C in this expression? Anybody can text? What is the capital C in this expression? इस पूरे एक्सप्रेशन में कैपिटल सी को क्या मानोगे? जल्दी जल्दी लिखो भाई. What is the meaning of capital C in this expression? कोई नहीं लिखेगा बेटा. अरे ये तो बहुत आसान चीज थी. The meaning of the capital C is the concentration. ये concentration ही तो है. No Sanika, it is not the Kc my dear. सानिका ये केसी नहीं है बेटा. अच्छा ओके, आई अंडरस्टूड सानिका एंड आशुतोष, आपने पूरे एक्सप्रेशन को केसी बना दिया. बिल्कुल सही है, वो भी आगे आएगा. बट कैपिटल सी का मतलब कंसंट्रेशन है. ठीक है. सो मयूर विनीत, ओके वेरी गुड. सो व्हाट यू कैन राइट, केपी इज इक्वल टू, इस कैपिटल सी को ब्रैकेट बना दो तो ये सी पावर आर हो गया, ये ब्रैकेट बना दिया तो डी पावर एस हो गया, यहां पर ये a पावर m हो गया और यहां पर b पावर ये n हो गया, है ना. ये जो कैपिटल C लिखा हुआ था ना, उसी कैपिटल C को अपन ने बोला ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की जगह मैंने ये साइन बना दिया. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन. ठीक. एंड देन RT पावर, अब बेस फिर से इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो दैट इज R प्लस S माइनस M प्लस N. ये बन गया. And now you identify. Everybody please identify what is this. इसको क्या लिख सकते हो? बहुत ध्यान से बताना. All the student please text me. This time I want the reply from all the student. किसी भी बच्चे का अगर मुझे आंसर इस बार नहीं मिला तो फिर मैं थोड़ा सा उसको डांटूंगा. So I want the answer from all the student who are joining this right now. What is this? इसकी जगह क्या लिख सकते हो? Yes, very good. शाबाश. So Vineet, Riya, Prakhar, Mayur, Anam, Nidhi, Ashutosh, Shanika, Mahek, very good. Kalyani, Pratik, Aditi, very good. So this is the Kc. ये Kc का वैल्यू हो गया, है ना. और अगर ये Kc का वैल्यू हो गया, very good, शाबाश. So Tanvi also not write the right answer and Sneha also. ठीक है. So what is the expression of the Kc term? क्या आ गया? The expression Kp is equal to Kc into RT power delta x. RT power delta x. ठीक. यहां मैंने मान लिया F, है ना, R plus S minus M plus N is equal to delta x. ठीक है ना. ये डेल्टा x है. तो
एक्सप्रेशन क्या आ गया, Kp is equal to Kc into RT power delta x. This is the expression between Kp and Kc. Now again a very much important question. How will you define this delta x? ये जो डेल्टा एक्स मैंने माना है ना, एनीबडी कैन टेक्स्ट मी हाउ विल यू डिफाइन, क्या है एग्जैक्टली ये जो मैंने माइनस किया है, सो व्हाट इज एग्जैक्टली डेल्टा एक्स, एनीबडी कैन टेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आपका कंपटीशन लेवल से मैच करता है, इसलिए आप बताओ हाउ विल यू डिफाइन द प्रॉपर वे। तो मैंने मान लिया कि अभी डेल्टा एक्स है, फॉर्मूला अच्छा सा लगने लगा, बट व्हाट इज एग्जैक्टली डेल्टा एक्स, आपसे कोई पूछेगा कि डेल्टा एक्स क्या है तो आप कैसे समझाओगे, व्हाट इज डेल्टा एक्स? Anybody can text? What exactly delta x? Yes, very good Vineet, बहुत बढ़िया. So Vineet Vitonde gave the right answer. सबसे पहला आंसर दिया, शाबाश Vineet. Delta x exactly number of the moles. Yes, very good Riya, बहुत बढ़िया. So Vineet Vitonde and Riya actually gave the right answer. बहुत बढ़िया, लाजवाब. ठीक, तो exactly delta x क्या है exactly? Delta x is the nt minus nr. है ना, NT minus NR, very good. Number of the moles of the product minus number of the moles of the reactant in the gaseous phase. Good प्रकार, बहुत बढ़िया. So this is the delta x. तो delta x is equal to NT minus NR. वही मैंने delta x मान लिया. ठीक, तो what is the relation came? Kp is equal to Kc into RT power delta x. So this is the relation between Kp and Kc. ठीक है बच्चों, ये Kp और Kc के बीच का रिलेशन आ गया कि Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT पावर डेल्टा x. ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन बताओ, है ना, आज के लेक्चर का एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एंड देन आई विल वाइंड अप माय टुडेस लेक्चर. द क्वेश्चन इज व्हेन Kp इज इक्वल टू Kc. Anybody can text me. When Kp is equal to Kc, ऐसा क्या कंडीशन होगा जब Kp और Kc का वैल्यू सेम होगा? Anybody can text me. ऐसा कब हो सकता है? When Kp is equal to Kc, बहुत ध्यान से क्वेश्चन बताओ, ये आपका जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन है. When Kp is equal to Kc, Kp और Kc कब बराबर होंगे? Yes, very good आशुतोष, बहुत बढ़िया. आशुतोष गिव द राइट आंसर, बहुत बढ़िया और सबसे जल्दी आंसर दिया है, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड. प्रखर आल्सो गिव द राइट आंसर. Kp is equal to कब होगा जब आपका when डेल्टा x is equal to 0. डेल्टा x is equal to 0 का मतलब समझे आप? डेल्टा x is equal to 0 का मतलब when number of the moles of the product is equal to number of the moles of the reactant. जब हमारे किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स अगर बराबर हैं, तो देन दिस इज द एक्सप्रेशन. ठीक है ना, प्लीज रिमेंबर दैट व्हेन डेल्टा x इज इक्वल टू 0, तो Kp इज इक्वल टू Kc into RT पावर 0, तो ये 1 बन जाएगा. एट दैट टाइम व्हाट इज द Kp? Kp इज इक्वल टू Kc. Kp हमारा Kc के बराबर होगा. ठीक है, ये ध्यान रखना, बढ़िया टॉपिक था, अच्छा क्वेश्चन सीखा आपने. अब यहीं पे मुझे जरा क्वेश्चन बताओ, H2 plus I2 reversible reaction 2HI for this Kc is given. Kc दिया है 1.80 into 10 to the power 2, है ना, इतना दे दिया, and 500 Kelvin. What is the value of Kp? What will be the value of Kp? जल्दी से क्वेश्चन बताओ, मजा आएगा. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई ये. फॉर दिस रिएक्शन Kc is given, they are asking about the Kp. What will be the value of Kp? Anybody can text. Kc is given, Kp I am asking.
For this expression, what is the value of Kp? Arya Singh? आर्या सिंह यार तुम्हारा नाम लेने के बाद ही तुम आंसर देते हो। आर्या मुझे आंसर बताओ फटाक से। सानिका, आर्या, निधि, रिया, स्नेहा, तन्वी, अदिति, कल्याणी, प्रतीक, प्रखर, विनीत, so many students are there. Tanvi, what is the value of Kp? Yes, very good. शाबाश कल्याणी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्योंकि क्या होगा इसका आंसर, इसके नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट कितने हैं? 2। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो गया? 2। डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 0। देखो ना, डेल्टा एक्स हो गया 0। ओके, सो Kp इज इक्वल टू Kc, है ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द Kc? द सेम वैल्यू ऑफ द Kp विल बी देयर, बिकॉज़ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, सो Kp इज इक्वल टू Kc. Kp is equal to Kc. So what is the value of the Kp will come? It will also come 1.8 into 10 to the power. Okay, so this is the way to solve the particular question. Okay, so that's all for today, my dear. I discussed with you that is the how to express the Kp, how we have to find out the Kp and the relation between Kp and Kc. Okay, so that's all for today, my dear. Tomorrow again we will meet. We will discuss some more question based on that. Till then, goodbye. Take care, and please join live streaming classes on the regular basis. And inform your colleague also, inform your friends also. Because today I got only attendance of 17 or 18 students maximum. So the next student should also join. ठीक है ना? चलो, thank you so much. Goodbye. Take care.